If the materialist is justified from his point of view in insisting on matter as reality, the relative world as the sole thing of which we can in some sort be sure, and the beyond as wholly unknowable, if not indeed non existence, a dream of the mind, an abstraction of thought divorcing itself from reality, so also is the sannyasin enamored of that beyond, justified from his point of view in in insisting on pure spirit as the reality, the one thing free from change, birth, death, and the relative as a creation of the mind and the senses, a dream, an abstraction in the contrary sense of mentality, withdrawing from the pure and eternal knowledge. Yeah. So I think we had already reflected a bit on this one. Yeah. But yeah, if you have any. I actually do. Thank you for asking. I was thinking, it's like because of this and of course many other things, how this also when we spoke about ill will, right? Like this thing that I know better. I've started seeing this in me, a lot of it which was veiled, like if I'm doing something or if I see somebody else doing it, there's something in me which would be like, which I've seen outside of me also, people doing it, and I have been surprised, but without realizing, I feel there's some undercurrent that says that, oh, I would have done this in 10 minutes. Or, I would have not fed him this. Oh, like, and it's so, in the sense when I see it, it's like, why? Like what the need or, use of this and how not, I mean, there's no truth in what I'm saying. That's the main thing. It's just superficial movements, right? That mean nothing. And yet it feels that, जैसे कहते हैं ना कि चित्त को गंदा करनी है ना? मतलब unnecessary those. So again, how there's something in me which wants me to feel like this is saying, right? Like a sannyasi would say, mine is better. A materialist would say, mine is better. I would say, mine is better. And we see this everywhere, right? Like a lot of people, they say, कि मैं कह रहा हूँ ना, है ना? जब he says मैं कह रहा हूँ ना, तो हम एकदम से हिल जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे कह रहे हो? बट ये जो छोटी छोटी आवाजें अंदर से आ जाती है कि I know, knowing that I don't know, and yet ये रहती एक्चुअली है। वही है ना कि अगर ये रियलाइजेशन आ जाए दैट हाँ, आई डोंट नो, और पुरानी पर्सनैलिटी के रिपल्स रहते हैं, फिर भी वन कैन listen to them and not follow the dictates कि I know that I don't know, so whatever is coming in the mind, how can I trust that, है ना? That itself is a very big step, but usually this the delusion is so great that I know and I am the right one. और यही वाइटल वाला है ना, वाइटल वाला द वाइटल अग्रेशन और द वाइटल पार्ट। और इसमें आई थिंक दैट इज़ वाई मैं उस दिन रिफ्लेक्ट कर रही थी कि जैसे डिप्रेशन है ना, मतलब अभी 50 सालों तक लोगों ने मेरी बात सुनी है बिकॉज आई वॉज द राइट वन एंड आई न्यू। अब एकदम से कोई तुमको भाव नहीं दे रहा, तो that leads to depression because the vital lives on that attention and me being the center of the world. So now me being a nobody, how can I accept? So it's so amazing, the delusion that I'm ready to give up a life, but I'm not ready to let go of that zid of the vital. I think that that's me. I think that's the basic
ignorance poison, that's the basic poison, that's me, that vital demand and aggression, that's me. और उसको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं कि no, that's not me and I can be alive even without that. I think I don't know where we had read it ना कि ego does not really care for my survive, मतलब even survival. अगर उसको अपने को रखने के लिए if it has to, जिंदगी भी दांव पे लग सकती है. हाँ दे, तो वो he'll be like हाँ हाँ मतलब तू बचा रहे, Hmm. मतलब ईगो बची रहे, Yeah, physically you die, that's all yeah, right. yeah. Yeah, and I don't see that. I mean, I have to see that, and I Hmm. must see that my, like again, na, it's like the God that slays and not the God that saves. है ना? मतलब that's the. Hmm. But when you look at this, it feels like, initially when whales open up, like it's very strange that they were there. Hmm. Why? है ना? मतलब you first conflict, थोड़ा time you spend there also, Yeah, yeah. because you feel कि अरे you don't have these things, है ना? True, मतलब true. again Yeah. that's, ये भी देखो कितनी ईगो हुई कि मुझ में नहीं है. हाँ, हाँ, हाँ. Yeah. And Yeah, very how. much, very much so in the spiritual path, because जैसे ही हम, even if we read one book of spirituality and attend a few workshops on spirituality, कहीं ना वो superior air it hits us. और हमको लगता है कि मेरा हो गया, अब दूसरों का कब होगा. बट तो कितना विरोधाभासी है यहाँ पे ना, सो कॉन्ट्रडिक्टरी लाइक एवरीथिंग एल्स, that on one aspect if I have to choose between I'm divine or I'm like nobody, I'll say, oh, I'm nobody. If I see somebody doing something, I will like, they are different, I am not in that category. And yet in the everyday trivial, which matters not, I would be like, I don't know why he's doing that, I don't know why she's doing that, मतलब ऐसे एक ना कूड़े की भी क्रीम, या देखो कूड़े को कूड़े भी की भी क्रीम, तो क्रीम वन ऑफ लिबरेट इट्स काइंड पेटेंट करा लो. yeah for 10 years at least. Okay, yeah, I think I'm ready to move on and तो नेक्स्ट with बुक का नाम है continuous मेरे offer. कूड़े की क्रीम. Yeah. Oh boy. What justification of logic or of experience can be asserted in support of the one extreme which cannot be met by an equally cogent logic and an equally valid experience at the other end. The world of matter is affirmed by the experience of the physical senses, which, because they are themselves unable to perceive anything immaterial, or not organized as gross matter, would persuade us that the suprasensible is the unreal. ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हो, ये एक आध Yeah. But just this, that day what we were reading in Sunlit Path, how Mother had said, na, कि denied by majority, है ना? That again just seems like that. This vulgar or rustic error of our corporeal organs does not gain in validity by being promoted into the domain of philosophical reasoning. What I was sharing, I think the word vulgar would be a good word for that. So thank you. Obviously, their pretension is unfounded. Even in the world of matter, there are existences of which the physical senses are incapable of taking cognizance. आई थिंक ये जो जैसे कबीर जी कहते हैं ना, एक जीव रिपु पांच.
है ना, तो ही कॉल्स द सेंसेस एज एनिमीज. And Sri Aurobindo mother would also talk about, like, transcending. In spirituality, we talk about transcending the senses. तो ऐसा लगता है कि जैसे senses, although they are doors for the physical functioning and everything, and making sense of the so-called material world, but पता नहीं हमको ये recognition क्यों श्योरिटी से नहीं होता कि they are like instruments, like telescope or a camera, and just like any instrument has limitation, this too has a limitation. But if a telescope is not able to look at the galaxies billions of light years away, it doesn't mean that the galaxies are not there, it just means that the capacity at the moment is not there. तो वही जो अपनी सेंसेस पे इतना हम भरोसा करते हैं ना, आई थिंक दैट सर्व्स एज एन एनिमी. कि मैंने देखा, मैंने सुना, है ना, और साथ में उसकी सिक्स सेंस, द माइंड ऑल्सो इंटरप्रेट्स. तो उसने ऐसा बोला और उसने यही सोच के बोला, वो माइंड इज ऑल्सो पैरेलली इंटरप्रेटिंग. एंड आई एम टोटली बिलीविंग इन ऑल द इनपुट प्लस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द माइंड, विच इज अगेन हाईली डिस्टॉर्टेड. And that is what I call as reality, that how can I ignore this reality. Many a times we feel that, जैसे कि बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया या रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही. तो मैं अगर बात करती हूँ जैसे कि पुट योर सेल्फ इन समथिंग डिफरेंट. हाँ, इग्नोर इट. उसको इग्नोर कैसे कर दो, दिस इज द question. How can I ignore this reality? So I think this is a very nice reflection of how tightly I believe in what the mind is saying, what the senses are saying, and take it as reality, and other things don't matter. This is reality and I can't ignore this. वही जो कीचड़ में, like, And time and again, we have seen that how wrong we have been, how our vision was narrow, how staying where I was, it was impossible for me to see a 360-degree view. And yet I want to stick to these I know, I know, I know, I know, I know, the small I know, the big I'm like, हाँ वो तो पता ही नहीं है ना, उसका मैं क्या करूँ. So I वो think because जिद. मुझे हाँ. पता है, हाँ. हम्म. Yeah. आई थिंक जिद जो है ना, मुझे लगता है व्हाट अपीयर्स इज कि वो जो जिद है वो इसलिए भी होती है बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग. अब बॉलीवुड भी यही दिखा रहा है, मम्मी पापा भी यही बोल रहे हैं, रिलेटिव्स भी यही बोल रहे हैं, कि सेटल हो जा, शादी के बाद सेटलमेंट हो जाती है. तो ऐसा कैसे हो गया कि मेरी सेटलमेंट नहीं हुई, तो सबकी इमेजेस हैं, सेटलमेंट की भी मेरे दिमाग में इमेजेस हैं, प्लस द फीडबैक आई कंटिन्यू टू गेट फ्रॉम सो कॉल्ड लव्ड वंस. तो उससे ऐसा, मतलब जिद छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है ना. मतलब ये भी नहीं दिख रहा कि कितना अपने आप को तड़पा रहे हो, बट जिद नहीं छोड़नी. कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा. एंड आई थिंक इसमें भी एक हाई ही होता होगा ना, दिस थिंग कि मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ना मुझे पता है, मुझे पता है, मतलब अ हम्म. फॉल्स सेंस ऑफ आई डोंट नो चाइल्डहुड कि आई नो एंड हम्म. अदर्स डोंट. हम्म. मतलब दिस इज वही जैसे कहते हैं ना गंदा रस, है ना, वही दैट व्हाट डज इट गिव मी आई डोंट नो बट आई नो a little bit more than you do, है ना. हम्म. और ये वही वाली बात आ जाती है जो एग्जाम्पल प्रशांत सर देते थे ना, कि एक ट्रेन में बैठ गए हो, है ना, और पता लग जाए कि वो गलत ट्रेन है, तो अब क्या लोगों को दिखाने के लिए बैठे रहोगे उसमें कि उतर जाओगे बीच में. आई थिंक वही हमारी भी है कि जिद कैसे छोड़ती है, क्योंकि जिद जब छूटती है तो इट्स लाइक ह्यूमिलिएटिंग. वन हैज टू गो थ्रू दैट शॉर्ट फेज ऑफ ego getting humiliated. And of course I did not know, knowing that I did not know, knowing that I was on a false trail, है ना. वो सब एकदम से झटका लगता है. फॉर द ईगो इट इज अ झटका, है ना. अगर मैं वो शॉर्ट झटका सह लूँ तो जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है, बट उस झटके से बचाने के लिए अपने आप को मैं बैठी रहती हूँ उस ट्रेन में कि लोग क्या कहेंगे. अच्छा मैं उतर गई तो इसका मतलब मैं इतने सालों गलत थी. ना वो कैसे मैं बर्दाश्त कर लूँ.
वो आगे भी गलत होने वाला है वो नहीं दिखता। ये है कि appearance wise how would it look, I don't know what it gives us. आई I थिंक think जैसे, सॉरी आप बोलो। नहीं, मैं कह रही थी वही प्यार की बात आ जाती है कि जैसे मतलब एज इफ वी डोंट लव अवर सेल्स एनफ that we continue to inflict more and more injury on ourselves. एंड व्हाट आई वांटेड टू शेयर वाज दैट बिकॉज आई एम वेरी क्लेवर, है ना, हाउ वी से कि मेरी क्लेवरनेस ही मुझे मार देती है, बिकॉज आई नो देयर इज समथिंग that is there which I do know. I mean, I'm talking about the higher truth. And because वो मेरे बस की नहीं है, मतलब because I am not putting in any effort, or that's harder to grasp or work towards. So I, है ना, get Hmm. satisfied. Hmm. Like because I do know that I know more than this. So instead of that, I keep, है ना, जैसे कहते हैं अगर when I do even sorting of a drawer or do some, है ना, मतलब when we feel कुछ नहीं कर पा रहे हैं, if we just do some cleanup, there is something in me which gets a bit satisfied, चलो कुछ तो साफ किया, Hmm. है ना, तो आई थिंक थोड़ा वो वाला एंगल यहाँ पे होगा कहीं तो रिलीफ मिले थोड़ा सा, है ना, कि तो वो नहीं पता, हम्म उसको तो डिनाई कर रखा है, बिकॉज वो ऐसे लगता है थोड़ी परसेप्शन के बाहर है, बट एटलीस्ट ये तो पता है कि ये नहीं हम्म करना, अच्छा ये तो पता है, तो हम्म इसमें मैं बना रहता हूँ, है ना, मतलब कि हम्म बेकार नहीं जा रही है जिंदगी। मुझे हम्म पता है कि चाय को उबालना नहीं चाहिए, और देखो हम्म वो उबाल रहे हैं, है हम्म ना, मतलब व्हाट एम आई फाइटिंग फॉर, मतलब हम्म ये पता भी है तो शेम ऑन यू, है ना, इससे अच्छा तो हम्म ना ही पता हो, है ना, तो हम्म दैट्स व्हाई डलनेस सीम्स बेटर देन sharpness in most aspects, because वो sharpness मुझे क्या sharpen towards what, है ना, that full, we don't see कि okay my child is very intelligent, that's good, but what will this intelligence be directed towards, that complete चीज हम नहीं जा पाते हैं, है ना, मतलब कहीं बीच में ही, अच्छा हाँ इंटेलिजेंट, चलो चलो चलो, क्या बिक रहा है, बेचो उसे। हाँ, ओके, So even in the world of matter, there are existences of which the physical senses are incapable of taking cognizance. yeah. Yet, the denial of the suprasensible as necessarily an illusion or a hallucination depends on this constant sensuous association of the real with the materially perceptible, which is itself a hallucination. Wow. And we say that is hallucination, है ना, कि जो विजुअल्स देखे या वो करे, है ना, मतलब, so yet the denial of the suprasensible as necessarily an illusion or a hallucinations depends on this constant sensuous association of the real with the materially perceptible, which is itself a hallucination, assuming throughout what it seeks to establish. It has the vice of the argument in a circle and can have no validity for an impartial reasoning. Yeah. इट्स लाइक मैं एक कैटेगरी बना रही हूँ विच इज़, और उस कैटेगरी को मैं क्वेश्चन भी नहीं कर रही, दिस इज़ रियलिटी and the rest everything is unreal, or maybe your imagination. And I don't even question that when I said this is reality, what is the reality of that, is that true that what I am taking as reality is actually reality? उसको तो मैंने क्वेश्चन किया नहीं, और मैंने बाकी सबको अनरियल बना दिया. I think this would be maybe the basis of, hints towards the basis of this gulf of spiritualism and materialism.
है ना, कि ऐसा लगता है कि उस दिन किसी से बात हो रही थी तो ही वाज सेइंग, जैसे हमारे दिमाग में आइडियाज होते हैं दैट कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आप पैसा नहीं टच कर सकते, और कम होना चाहिए। तो व्हेन ही वाज शेयरिंग एंड ही वाज अ वेरी, लुक लाइक अ वेरी सेंसिबल फेलो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा उल्टा यही तो करना है, मतलब उल्टा ऐसे लोग जिनको अपने एसेंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हाउ वुड दे यूज मनी एंड हाउ वुड अ पर्सन यूज मनी इफ ही इज ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। सो in fact you should gather more money and use it to good purpose, है ना। और ये मतलब वही मैंने उसको बोला, मैंने कहा बस अपने दिमाग से जो इमेजेस है ना, दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज अनस्पिरिचुअल, आई थिंक सो मेनी इमेजेस आर देयर विच वी डोंट इवन गेट टू नो। जैसे इवन जैसे वेरी बेसिक वन इज एलोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, है ना। सो आई रिमेंबर आई हैड दिस something in the mind that allopathy or surgery is something which is, not to be touched and stay away from. And funnily enough, I was given this example ki no, when required you have to go through everything, everything has a proper place. So it helped me break that barrier of putting thing in categories, this is spiritual, this is more, alternative medicine is more spiritual, this is less spiritual. While we see that if need arises, then everything can be divine, is divine in fact. What is there if not the divine everywhere? I think in the same tone, when we see people or meet people who are into, say, modalities, healing modalities, or like we were discussing yesterday, Hmm. उसका भी अपना एक है ना, it feels के like we were saying to each his own, but I don't know, because अगर naturally, so we have the capability of pulling energies, right? That's what they say we are going towards, that is being veiled. तो अगर अभी naturally नहीं आ रहा है because we have so much, तो एक artificial medium से उसको एक pull कर लेना to give it, that also है ना, मतलब Hmm. yeah, it's interesting. And about this hallucinations, मतलब I've had experiences in which people have just denied things which, say, if somebody has died, right? And you were like, okay, how can that be the end? Like, do you, not realize that death is not the end? And there are people who are standing in front of me and saying, yes, because, this is what I see, right? I don't know how to see something that's not there. And initially it's very strange or it can even make you angry. But then you also feel a lot of compassion because there's a lot of, because we have always been taught just to see what can be seen. है ना, मतलब उसको एक रेजिंग अप में इतना बड़ा कर दिया जाता है, which is our fault, right? And we can break the cycle, but the inability to recognize something when it's hitting you on the face. It is a dead body in front of you, for example, or somebody has recently died, and then too you are denying that there is something more to be able to stand and justify. That needs a lot of ignorance and lots of जिद, जो हम कह रहे थे कि नहीं, मेरे को देखना ही नहीं है ना, Hmm. मतलब. Hmm. Hmm. And of course everything is there till it's not, है ना, मतलब you never know how, when that. And like people saying कि ये तो research institutes में होता है, Vedas, और ये भी वही हो गया, right? कि because क्या? Vedas, Upanishads are for ashrams. This life, है ना, is for, right? It's like Hmm. I cannot see it that way, so Hmm. it does not exist, Hmm. है ना, मतलब Hmm. there is no, Yeah. yeah, it's black and white, है ना, कि आई ये थिंक ये है जो ये. कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे ना आप, जस्ट लाइफ कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर डेथ, तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक तो जो तिग्नाथान की एक्सप्लेनेशन है ना इस पे, दैट आई नेवर डाई, समथिंग लाइक दैट, जो था दैट अ क्लाउड बिकम्स रेन एंड रेन बिकम्स पेंसिल, Yeah, ना, yeah, एंड आई yeah. कैन सी अ क्लाउड इन अ पेंसिल।
आई थिंक Yeah. दैट वाज वेरी रेवलेटरी, क्योंकि वो तो मटेरियल बंदे को भी सूट कर रहा है ना. Yeah. अब देखो, अब मतलब इफ आई कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ बॉडी एंड नथिंग मोर, ट्रू, ओके, starting from there he would say that now the body is becoming sand, so I am not going anywhere, I am just changing forms. आई थिंक वो भी काफ़ी मेरे को अपीलिंग लगा फॉर अ पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम द मैटर साइड, यू नो, हु मे नॉट हैव अ नेचुरल फेथ इन समथिंग बियॉन्ड मैटर. क्योंकि उसमें तो आपको, उसमें तो डिनाई ही नहीं कर सकते ना आप कि यस, क्लाउड इज बिकमिंग रेन, रेन इज बिकमिंग प्लांट, प्लांट इज बिकमिंग पेंसिल, है ना. उसमें तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते. इट्स अ वेरी फैक्चुअल सेंसोरियल ऑब्जर्वेशन, है ना. And it Yeah. also gives us a sense of kind of getting widened and expansive. And when we reflect over this, that I actually am not going to go anywhere, I'm going to be here in the air, in the sand, I think a lot of relaxation also comes then. कि अच्छा, कहीं जाना ही नहीं है, मतलब यही तो है. Body, for the persons who would Mm-hmm. know that, you know, who have this belief that I'm just this body, even there we are not going anywhere. चेंजिंग फॉर्म्स, जैसे वो फिजिक्स में कहते हैं ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फॉर्म्स. जैसे काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल बन गई, है ना. पोटेंशियल वापस काइनेटिक बन गई जब वो नीचे आ रही है तो. I've had these conversations with some friends and all intelligent, so like worldly, very accomplished and intelligent, and they're like that I mean it's just word play है ना. मतलब मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो खत्म हूँ, बॉडी का तो अब मतलब जो भी जहाँ है, बट उसका होगा क्या वो पता नहीं. न्यूटन्स लॉ है, हाँ है, बट ऐसा नहीं है ना. मतलब बिकॉज अगेन वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हल्का सा और हो मुझे लगता है जाता. कि अगर आप किसी सम ट्रू एक्सप्लोरर, यू नो, पर्सन हु हाँ रियली वांट्स टू गो इन, अगर हाँ आप उससे आप टू ऑपोजिट पोल्स पे शुरू करोगे ना, हाँ यू विल हाँ सी दैट वी विल मिंगल टुगेदर. हाँ हाँ या अगर इफ यूजुअली वी आर नॉट रेडी फॉर एक्सप्लोरेशन, हाँ क्योंकि हाँ जो भी हाँ मेरे बिलीव्स हैं वो आई टेक इट एज अ पार्ट ऑफ माई सेंस ऑफ सेल्फ. हाउ या डेयर यू हिट समथिंग लाइक, यू नो, इट या वॉज मी, या इट वॉज माई या बिलीफ. या या But if someone is ready to drop that off and curious to explore, so we can't prevent from this from happening, that we actually mingle together, है ना, even the person who is starting with matter. या मतलब वही कहीं पे वो दिख जाती है कि दिस इज माय ग्लास सीलिंग है ना, कि Hmm. इसके बियॉन्ड नहीं मतलब. Hmm. मतलब इम्पार्शियल रीजनिंग नहीं हो सकती बिकॉज वही दैट दे लाइक यू वर डिस्कसिंग ना, जैसे साइंटिस्ट आल्सो हैज हिज ओन पर्सनल दैट फैक्टर आप बोल रहे थे ना अबाउट बीइंग ऑब्जेक्टिव. Hmm. Not only are there physical realities which are supra-sensible, but if evidence and experience are at all a test of truth, there are also senses which are supra-physical and can not only take cognizance of the reality of the material world without the aid of the corporeal sense organs, but can bring us into contact with other realities, supra-physical and belonging to another world, included, that is to say, in an organization of conscious experiences that are dependent on some other principle than the gross matter of which our suns and earth seem to be made. I think यहाँ पे वो वाला एक्सपीरियंस भी आई एम एबल टू रिलेट. जैसे
Anita Murjani shares her experience, in the ND state, and that she was able to see past, present, future at once, which is amazing. So the, and that is, of course, she can share it because she felt it. तो कहीं ना कहीं वो, जैसे सूक्ष्म इंद्रियों की बात की गई है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं वी हैव दैट सटल, इफ वी एक्सपैंड इट, एंड दैट इज मे बी द रीजन वाई मदर एंड श्री अरबिंदो टॉक अबाउट नॉट शनिंग ऑफ द सेंसेस बट रिफाइनमेंट ऑफ द सेंसेस, है ना, कि इतनी रिफाइन हो जाए, इतनी रिफाइन हो जाए दैट यू आर एबल टू एक्सेस इवन दैट विच इज सुप्रा, considered suprasensory, supraphysical. What mother used to share, जब वो, she had a plaster, I think, on her leg when she's not able to move, and then she used that time to expand her consciousness, and she is able to see what is happening in the other rooms which she is physically not able to see. तो वो भी हमारी कैपेसिटी है, which is really amazing. Again, that can be considered as hallucination, that you must be hallucinating, क्योंकि that is not commonly found. One in 100% or maybe 1000% would be able to do that. And just because it is, वहीं पे आ गए, आई थिंक, जो कल बात कर रहे थे, जो आप शेयर कर रहे थे ना, बिकॉज इट्स डिनाइड this experience or the new consciousness, it's again and again denied. The world is not ready to accept it at the moment. और इनफैक्ट वहाँ के लॉज भी डिफरेंट है ना, जैसे ये बता रहे हैं इन द लास्ट लाइन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस दैट आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर प्रिंसिपल देन द ग्रॉस मैटर. सो लॉज भी वहाँ के ऐसा, ये मटीरियल रियलिटी जो हम इन सेंसेस से करते हैं, इट हैज़ डिफरेंट लॉज, एंड देन देर आर realms or places which we can visit which has different laws. It's not that the laws are also same. Yeah, and people like even Anita Mujani, when you were sharing, how she could see it all simultaneously. How people say that maybe 2 minutes here are 2 hours there, or I mean, and it's consistent, with like so many people who have had this experience, they say the same thing. And yet people say कि अरे तुमने वो सुना था ना तो hallucinate कर लिया, है ना, मतलब Yeah. that's okay. I mean, that's okay too. But yeah, तो इतना established है कि वहां पे भी laws हैं. Yeah. Okay. Constantly asserted by human experience and belief since the origins of thought, this truth now that the necessity of an exclusive preoccupation with the secrets of the material world no longer exists, begins to be justified by newborn forms of scientific research. The increasing evidence of which only the most obvious and outward are established under the name of telepathy, with its cognate phenomena, cannot long be resisted except by minds shut up in the brilliant shell of the past, by intellects limited in spite of their acuteness through the limitation of their field of experience and inquiry, or by those who confuse enlightenment and reason with the faithful repetition of the formulas left to us from a bygone century and the jealous conservation of dead or dying intellectual dogmas. So I think what he's sharing is very funnily यहाँ पे, that only a mind shut up in the brilliant shell of the past
by intellects limited in spite of their acuteness. So no matter how sharp I am, I'm still like caged in my intellect and shell of the past through the limitation of their field of experience and inquiry, or by मतलब अगर जो लोग इसमें बंद हैं, आई थिंक ओनली वट ही शेयरिंग है कि वही इसको सिर्फ नेगेट कर सकते हैं, अदरवाइज देर इज इनफ evidence in the name of telepathy and clairvoyance also that this is a truth, this is a fact, this exists along with the other reality, or by those who confuse enlightenment and reason with the faithful repetition of formulas left to us by bygone centuries. आई थिंक मज़े की बात ये है कि नाउ अब आप फिजिक्स के अंदर क्वांटम फिजिक्स को देखेंगे तो वहाँ पे भी ये जैसे टेलीपैथी की बात है ना, इट्स लाइक टू थिंग्स हैपनिंग एट वंस, है ना. सो जैसे यू थॉट ऑफ कॉलिंग मी, आई थॉट ऑफ कॉलिंग यू एट वंस, है ना. सो दैट्स ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ टेलीपैथी, है ना, कि दोनों को. और जैसे ही फ़ोन देखा तो बाय वेरी कॉमन अक्रेंसेज, है ना, दैट यू वर थिंकिंग ऑफ समवन एंड समबडी मैसेज. तो इसमें देयर वाज अ टर्म विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, अभी मैंने डेप्थ में नहीं देखा उसको. इट वाज कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट. तो उसमें क्या है कि उसमें इट्स लाइक टू पीसेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स and they may be like miles away, but if you make a change or some shift happens in one, the other gets to know that shift and behaves accordingly. And now they are trying to test ki, like how far this can be stretched, like how does it depend on distance at all, or is it only maybe consciousness. They would not call it consciousness, but consciousness, which again, since consciousness is not limited by time or space, so it doesn't matter whether it's here or there, it knows, it has that knowing. तो जैसे श्री अरविंदो बात करते हैं कि चाहे तुम स्पिरिट से रीच करो चाहे मैटर से रीच करो, रीच वहीं पे करना है. तो आई थिंक वी आर एट द वर्ज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट knowing that there is something to it that we cannot ignore anymore. This cannot be ignored as a quantum entanglement. इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग फिनोमिना, है ना, जो हमारे में है कि मुझे पता है. आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू दिस, I mean, from every angle again, जैसे अब that day we were talking about, the mission to the sun, है ना, मतलब कि जैसे अब normal mind when we were studying, we, है ना, we have studied that, sun को approach करना impossible है, we'll burn, है ना, वहीं पे रुक जाते हैं हम, है ना. But then when we see, अरे now there is a mission कि जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल है, इसका मतलब इम्पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी, मतलब हम बस उसको बोल देते हैं अच्छा ये हो गया, बट बाकी चीजें इम्पॉसिबल है ना. मतलब whenever we expand in one field, we just take that much, इतनी परसेप्शन है कि उसको हम फर्दर हेंस प्रूफ नहीं कर सकते, हम बस उतने में ले लेते हैं. बिकॉज आई लाइक लिमिटेशंस, अगेन वो आई नो एंगल काफी ज्यादा हर जगह दिखता है कि हाउ इट्स सच अ सेल्फ लिमिटिंग कॉन्सेप्ट कि अपने को अपने अंदर ही जकड़ के रखा हुआ है और देखने नहीं दे रहे हैं, बिकॉज हमें कहना है कि मुझे तो पता है कि देखो कुछ और ना दिख जाए. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक श्री अरविंदो का कोई कोट था ना, इम्पॉसिबिलिटी इज द मदर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ऐसे कुछ करके ऐसे है कुछ, ना. वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब द मोमेंट नाउ आफ्टर रीडिंग दिस, है ना, द मोमेंट वी अपने मुंह से गलती से जिस दिन निकले, है ना, इम्पॉसिबल, क्योंकि निकल जाता है ना, but the moment we see it, it must be then again a parallel thought can come that now it will be possible, है ना. It may be impossible right now, but yeah, it will be possible. जैसे जित सुनमिला ऑल्सो सेज कि कितना, मतलब लाइक हाउ
I mean, the situation is quite bad. Hmm. And yet she always spins it, right? She Hmm. says that, but because I think again the happenings for Hmm. this conversion Hmm. would not be based on logic or numbers or Exactly. graphs or तो इसीलिए ऐसे लगता है कि हाँ चुप हो जाओ है हाँ, ना. हाँ, Yeah. And they also say this about spiritual advancement ना हाँ, कि you have no clue where anybody is. हाँ, Like zero. You हाँ, might be thinking, oh my God, he's yes, so superfluous yeah, and not absolutely. that it matters. I mean, it's Hmm. not even a point here, but Hmm. Hmm. yet good to know, good to know. Yeah, I think वही है ना जो Jitsunma what she shares is that the conceptual mind, the limited mind, its work is sorting and organization. Mother says its work is sorting, organizing. हाँ, तो what it does it keeps on even categorizing whatever events it sees. तो बंदे से मिले तो बंदे को कैटेगराइज कर दिया, अच्छा ये मेरे से ऊपर वाला, ये मेरे से मैं इससे नीचे वाला, हाँ है ना, ये तो करते हैं, चाहे उसकी यूनिफॉर्म के बेसिस पे करें, चाहे किस है ना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे करें. सो वी जस्ट can't get rid of this categorizing happening all the time like in default mode, and this is what she shares is the function coming from the ego mind or the sense mind, है ना, the limited mind, that it just can't help but categorize. I am now inferior, now I am superior, अच्छा इस बंदे से तो मुझे ज़्यादा पता है, अच्छा इससे तो कम पता है. This is what she shares. And then that's all. I mean, वही है कि वही जो एनर्जी है या जो एक स्पेस है जो कि या फिर एम्प्टी हो सकती थी, Hmm. जो एक्चुअली यूज हो सकती थी देखने में कि असली में क्या हो रहा है ना, Hmm. दैट अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस जो कि हमको एफर्ट लगता है ना, Hmm. इसीलिए एफर्ट लगता है बिकॉज बहुत ज्यादा दूसरी तरफ जा चुके हैं. Yeah, वो The हैबिट way बन when, चुकी है, हैबिट हाँ बन कि चुकी if we listen to Thai, है. how he says कि breath is so pleasant है ना, कि Yeah. एक बार you fall in love with it, Hmm. तुम्हारा you would not want to leave it. Hmm. बट वहां तक पहुंचने के लिए ऐसे लग रहा है घर वापस आना ही बहुत Hmm. बड़ा काम लग रहा है कि Hmm. तो फिर बिल्कुल. बाकी जो मेरे ये इतने सारे काम है, जजमेंट्स, ये मुझे उनका पता है क्या होगा? उनका क्या होगा. हाँ, Yeah. मतलब इट्स सो स्ट्रेंज कि opening your hands है ना and just dropping is so hard because बहुत मुश्किल से बहुत इंटेलिजेंटली मैंने इकट्ठा करा है ये कूड़ा है ना, मतलब कि मेरा है ऐसे Yeah. करके कि Yeah. हाँ. Uh, एंड I, अब सूक्ष्मता ऑफ कॉन्शियसनेस देखो, जैसे अब बुद्धा hmm. सॉ अ डेड पर्सन एंड ही इज लाइक कि अच्छा मैं भी मर जाऊंगा, Hmm. एंड दैट्स इट है ना, एक सी अ ओल्ड पर्सन, अच्छा मैं भी बूढ़ा होऊंगा, एंड स्विच Hmm. वन ट्रिगर Hmm. एंड स्विच. Hmm. और यहाँ पे ट्रिगर्स की है ना मतलब Hmm. एंड जस्ट Yeah. नॉट सेइंग एनीथिंग मोर, बट या आई थिंक वही बात है ना, मतलब जो आपने बोला सूक्ष्मता है ना, सेंसिटिविटी ऑफ द हाँ. कॉन्शियसनेस, द सटिलिटी. तो वही है, जितनी गहरी नींद उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, जितनी गहरी नींद उतने ज़्यादा रिमाइंडर्स. नींद गहरी है. आप कुछ कह रहे थे. तो याद नहीं क्या कह रही थी, ऐसे कुछ आते रहते हैं ना, लेफ्ट राइट से कुछ फेंकना चाह रही होंगी. और मैं वही कह रही थी कि जस्ट दिस possibility that now I am able to look at these ripples of opinions, judgments, categorizations happening. I think वही अपने आप में एक breathing space दे देता है कि okay, I see you, walk that road enough, बैठ जा मतलब कोने में. I think that itself is very like lightens up the life in that sense. You don't have to carry that baggage anymore. The baggage may be there, it may be showing itself. वही मुझे बार बार आपका ब्यूटीफुल माइंड वाला वो लास्ट सीन याद आता है, when he shares, I still see them but I choose to ignore. तो मुझे लगता है वो ईगो के साथ भी, ईगो माइंड के साथ भी सेम चीज़ है बिल्कुल. ऑल दीज जजमेंट्स दे कीप ऑन कमिंग. देन थॉट्स अबाउट पीपल, आर दे सुपीरियर, आर दे इंफीरियर,
है ना, जो आप कह रहे थे कि मुझे ज्यादा पता है उसको कम पता है ना, मी बीइंग राइट, वो आता रहता है, रिपल्स तो आते रहते हैं, बट नाउ यू चूज टू इग्नोर, यू हैव वॉक दैट पाथ इनफ, feel disgusted with the old self, as mother Yeah. says. And when we are living with other people, like, in a setup, Hmm. and you see them doing really contradictory things, you know, like, as in, I mean, obviously, numerous examples. It's such a beautiful way to just take it that, how much of what you do is also totally, not how much, but everything. जैसे अब my assertions, my beliefs, है ना, my कह रहे इसको तो ऐसे रखना, small small things में जब दिख, as in it's so easy then to put this on you, है ना, to take it on you कि हाँ तो तुम भी तो यही करते हो, है ना, Hmm. मतलब, बट हम उसको ले लेते हैं कि अरे देखो वो कर रहा है, Hmm. बट मैं आई एम सो सॉर्टेड, दैट्स सच अ जोक, है ना, Hmm. कि मेरी क्लेवरनेस में मुझे मेरा बुद्धूपना नहीं दिख रहा, Hmm. and it's highly contradictory, like if I'm looking, it's Yeah. highly contradictory, Yeah. and that really helps in that hammering कि ये देखो, देखो ये हाल है ये हो हमारा, तुम, देख, हाँ ये हो तुम, मैं नहीं। हाँ, या मदर कहती है ना, वॉट एवर शॉक्स यू इन द अदर पर्सन, लुक एट इट. एग्जैक्टली, एंड मतलब couldn't be truer, मतलब couldn't be truer. But again, when And it comes at first, it's of course hard to take in, है ना, कि how can this be me, बर्दाश्त नहीं होता yeah. स्टार्ट. बिकॉज हम देखते ही नहीं है पूरी पिक्चर, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि वी लीव थिंग्स मिड वे. जैसे सी, फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody loves eating cookies, ठीक है, I would say that, oh my god, he or she eats so much junk, they love eating cookies, but I don't see and I would say मैं तो cookies नहीं खाता, but I will not see the 10 other junks that I am eating, that the other person might not be thinking. So the other person mostly sitting there thinking कि हे भगवान वो कितनी आइसक्रीम खाता रहता है ना, मतलब, and when they talk, it's like, you should eat healthy. And the other person says, I was thinking the same. And yet we don't see the play that is happening. कि how I'm not seeing the whole thing, because अगर मैं पूरा देखूं, मैं कुछ बोल ही नहीं, वो आने की कोई सेंस ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, और कोई ट्रुथ ही नहीं है. बट बिकॉज वही लिमिटेड है ना, मैं आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पे अपनी कमेंट्री और अपनी वो. आई थिंक इसमें एक चीज़ जो हेल्प करती है, अब जैसे टू रिफ्लेक्ट अपॉन, सिंस वी हैव दिस माइंड एंड इट गोज ऑन चर्निंग, तो वन थिंग विच इज़ वेरी हेल्पफुल हेयर फॉर दोज हु वांट टू वर्क, मुझे लगता है, जो जैसे जो आलोकता का भी मैंने आपको ईशा उपनिषद वाला जो बताया था कि इफ़ आई एम रिजॉइसिंग इन द अदर्स हैप्पीनेस, आई एम एक्चुअली, when I'm able to rejoice, I'm putting myself as the true self which is present in all. So I am identifying instead of the ego consciousness with that higher self. तो मुझे लगता है when I यूज दिस एज अ रिफ्लेक्शन फॉर डेली लाइफ, है ना, तो उसमें बड़ा एक रिलीफ मिलता है, तुम बैठ जाते हो वापस, जो एकदम से खड़ा होने वाला था कुछ अंदर कि वो देखो उसने क्या किया टाइप, वो एकदम से वो बैठ भी जाता है, बिकॉज यू फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम ग्राउंडेड, है ना, कि ये मैं ही तो हूँ जो वो कर रहा है ना. और अगेन इट मे गिव यू अनदर इंसाइट्स टू वर्क अपॉन द सिचुएशन. और आज मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें ये था कि जब आप किसी को दे रहे हो, व्हेन यू आर गिविंग, who you are giving to, it's the divine who is receiving. तो अगर उस बंदे ने, द ईगो कॉन्शियसनेस, उस बंदे में अगर वो रिजेक्ट भी कर दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि मैंने आपको कुछ ऑफर किया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो कह रहे इवन इफ इट इज रिजेक्टेड, द भावा विद विच यू गेव, द इंटेंशन विद विच यू गेव, दैट इज एक्सेप्टेड, सो द डिवाइन हैज एक्सेप्टेड इट. आई फाउंड इट वेरी ब्यूटिफुल कि यूजुअली हम इसको काफ़ी इंसल्टिंग वे में ले लेते हैं ना, कि अरे मैंने दिया तूने लिया नहीं, है ना, वी कीप ऑन वेटिंग फॉर अदर्स अप्रूवल. तो इसमें वो कह रहे हैं कि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप इस वे से दो कि मैं जिसको दे रहा हूँ, मैं डिवाइन इज गिविंग टू डिवाइन,
है ना? तो I am or me, little one, whatever is giving to the divine in the other one, है ना? तो अगर आप इस भाव से दे रहे हो तो it's the divine who is receiving and you don't have to worry whether it is rejected or accepted. तो ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग एंगल लगा, वेरी अगेन वाइडनिंग, दैट आई एम नॉट ट्रैप्ड इन माई, मेरा एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, किस तरीके से बोला होता है. और आज एक देयर वाज अ मीटिंग, आई हैड टोल्ड यू ना, देयर वाज दिस मीटिंग. सो इन द मीटिंग देयर वाज अ डिस्कशन, a kind of a rule going to come up that residents are not allowed to talk in a rude behavior to the staff, जो यहाँ का staff है. And it was like amazing. I was totally mum during the meeting. I could not speak a word because I was just amazed, like amazing what was happening. So many things, again difficult to put in words. तो यू वुड नॉट बिलीव, जो आप कह रहे थे ना कि जो हम दूसरे में कर्ब करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली में हम में प्रेजेंट है, वो दिखता नहीं है, आई एम नॉट रेडी टू टेक इट. यू वुड नॉट बिलीव द रूडनेस विद विच दैट मेन पर्सन, how he was insulting the head who takes charge of everything in front of 10 other members. And then after 5 minutes it is being decided that rude behavior by residents is not accepted to the staff. I was like, wow, matlab, how can this happen? This is not happening, this is not happening, and this is happening. एंड मेरा एक दो बारी मन हुआ कि मैं बोलूं कि बट इज दिस नॉट रूड बिहेवियर विद विच दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, बट मेरा मुंह ही नहीं खुला. मतलब आई वाज सो डम स्ट्रक टुडे. एंड अगेन बात उसी पे आ जाती है जो जत्सुन्मा कहती है, 3 रूट पॉइजन्स, यू नो, अटैचमेंट, एवर्जन एंड इग्नोरेंस इज द रूट मोस्ट पॉइजन, है ना? तो बिकॉज आई डोंट नो हु आई एम, I keep on creating ego conflicts and complicate the entire situation just because I think that I am different and the other person is somebody else. वो oneness ही नहीं है, you know, वो interconnection ही नहीं है. और दूसरे को नीचे दिखाना या खुद को ऊपर बढ़ाना, ये तो मैं तभी करूँगी जब मैं ignorant हूँ, है ना? मतलब जब मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता कि वो भी मैं हूँ और मैं भी मैं हूँ. बस भगवान को ही याद किया मीटिंग में. ये देखो सेंटेंस, बस भगवान को याद किया, कितना उसको. पेज नंबर 22 है. रुके यहाँ पे नेक्स्ट टाइम, और यू वांट टू टेक वन मोर पैराग्राफ, दिखाऊँ आपको? ये वाला है, दिस वन इज टू स्टार्ट. वांट टू रीड, पढ़ सकते हैं. It is true that the glimpse of supra-physical realities acquired by methodical research has been imperfect and is yet ill-affirmed, for the method used are still crude and defective. But these rediscovered subtle senses have at least been found to be true witness to physical facts beyond the range of corporeal organs. There is no justification then for scouting them as false witness when they testify to supraphysical facts beyond the domain of the material organization of consciousness. यहाँ पे 1 मिनट के लिए पॉज करके, हाँ, दिस इज क्वाइट सेल्फ वो ना, कि जब टेस्टिंग, वही मतलब कि आई कैन जस्ट से कि मुझे नहीं दिख रहा तो है नहीं, है ना? बट एटलीस्ट इससे हम ये तो प्रूव कर सकते हैं कि चीजें हैं जो मुझे नहीं दिख रही है. So there is no justification then for scouting them as false witness when they testify to supra-physical facts beyond the domain of the material organization of consciousness. Yeah.
यहाँ पे वो बात भी याद आ रही है मेरे को जो जित्सुना बताती है ना, दैट व्हेन शी वाज अ चाइल्ड हर मदर यूज्ड टू हैव दिस सियंसेस, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, व्हेन दे कॉल द हम्म, स्पिरिट्स एंड, हाँ हाँ है ना, सो यू कांट ऑब्वियसली सी एनीथिंग, है ना, बट इफ यू आस्क द हाँ स्पिरिट टू मे बी टर्न द टेबल ओवर, हाँ हाँ है ना, तो हाँ द टेबल इज टर्न, हाँ हाँ देर इज अ हाँ। प्रूफ दैट समथिंग इज देयर. Like the evidence of the physical senses themselves, their testimony has to be controlled, scrutinized, and arranged by the reason, rightly translated and rightly related, and their field laws and processes determined. But the truth of great ranges of experience whose objects exist in a more subtle substance and are perceived by more subtle instruments than those of gross physical matter claims in the end the same validity as the truth of the material universe. Yeah. But we are so wanting to deny them most of the time कि हम उसको at par भी नहीं रख रहे हैं, है ना, like we don't give it the same. Okay, now I can test this, now I can do this. I don't. I'm so already convinced before even experimenting of my, what the result would be. Lot of times. Should I go further? Last one. The worlds beyond exist. They have the universal rhythm, their grand lines of formations, their self existent laws and mighty energies, their just and luminous means of knowledge. And here on our physical existence and in our physical body, they exercise their influences. Here also, they organize their means of manifestation and commission their messengers and their witness. Yeah. आई थिंक आप वो देखो एंजल्स की जैसे बात करते हैं ना, आर्क एंजल राफेल और गैब्रियल, अगेन मतलब for one person it could be just hallucination, for another in fact I remember once I had talked with a person who used to be in touch with angels and maybe read their signals and what they are sending. So Miko, one thing which really resonated with me was that she said that first you have to believe that he's here. जैसे कबीर कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, तो आपने विश्वास किया तो है, Mm. आप विश्वास नहीं करोगे तो नहीं है. तो that was really very powerful क्योंकि it means it gives me a lot of power that if any Mm. time I want to call upon some higher power or something, then it is my possibility. Yeah. Peter Pan में, if you remember, Peter Mm-hmm. Pan, Mm-hmm. Yeah. कुछ ऐसा होता था ना कि the children had stopped believing in fairies because the pirates were saying that they don't exist. So Mm-hmm. the fairies had started dying. And I Oh, think then Peter Pan told them, कि come on, say that I believe in fairies, I believe in fairies. अच्छा जब वो अच्छा. बोल रही थी, suddenly they started getting energy when the children started saying that we believe in fairies. Beautiful. You know, and then suddenly they got, Wow. came into thing, and then they rescued the children Wow. because they were almost gone. या Yeah. अब देखो इसी तरीके से हम अपने जो Mhm. हैबिचुएटेड थॉट पैटर्न्स हैं, थॉट स्टोरीज हैं Mhm. जो दिमाग में, Mhm. उनको हम अलाइव ऐसे ही रखते हैं उस पर हाँ, विश्वास कर हाँ, करके, हाँ. है ना, एंड द मोमेंट आई रिड्यूस द फ्यूल है ना, तो वो भी ठक करके व्हाट एनर्जी दे हैव.
और अपने पोटेंशियल को, मतलब जिसको मैं केपेबल हूँ, जो मैं हूँ, हम्म, उसको मैं बोलता अरे वो तो है ही नहीं, देख देख हाँ, देख कैसे या जी रहे हैं, और वो बड़ा हुआ है लेटे या एंड द मोमेंट आई से आई थिंक इट गिव्स अस बैक अ लॉट ऑफ पावर, है ना, दिस रियलाइजेशन हाँ हाँ that हाँ I हाँ am the creator of my life or whatever I believe in, है ना, मतलब they are not existing, the stories are not existing by themselves. The more I look at them again, quantum physics यहाँ भी आ जाती है, that the moment you look at it, it behaves like a particle. So the more fuel I give it, the more real I am making that story in the head true for me. And again, parallelly, it gives me the power to recreate a new story for myself. है ना, मतलब जैसे mother talks about power of imagination, visualization. That also becomes possible only because of this. That if I was giving that power, now the same power I can give to something I want to create, which nurtures me rather than drains power. एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं मानू ना मानू, ओशन तो बह ही रहा है, मैं मान लूं तो दिख जाएगा, नहीं मानो तो ठीक है, मतलब चने खा लो बैठ के, है ना, या मतलब it's not I am creating, it Hmm. is Hmm. existing, Hmm. I'm just blocking. I'm So I blocking. can just हाँ stop the हाँ blockage. आई थिंक वही बात होगी ना, जैसे डूअरशिप, फॉलिंग अवे ऑफ डूअरशिप, है ना, तो वो हाँ वॉल वॉल वॉल, तो वो फ्लो आ रहा है और तुम बस अपने आप को कि नहीं नहीं, हाउ वुड आई लिव इफ नॉट फॉर माई वॉल्स, और वो वॉल्स लगती कहाँ है, वो तो अच्छा लगता है ना, दैट बिफोर इट अपीयर्स एज कूड़ा, दैट वॉल, it actually appears as something very nurturing and helpful. That's why I don't leave it, you know? And that's my ignorance, that I am finding those walls nurturing and fruitful. हाँ। पेज 22 पे छोड़ा है ना। पेज 22 था, हाँ, ये हाँ, ठीक है। मतलब ये लास्ट में ये बता रहे हैं कि वो इतने रियल हैं दैट इट्स लाइक इक्वलेंट टू हम्म, whatever you consider real. The worlds beyond exist. They have their universal rhythm, their grand lines, formations, self-existent laws, mighty energies, and just and luminous means. इसमें सावित्री में they talk about these worlds and planes of existence and all. अभी वहाँ पे ओके। पहुँचे नहीं है, but वो कहते हैं बाद में बताते हैं. And here on our physical existence and in our physical body, they exercise their influences. So it's not that we are disconnected या in या that. या या यहाँ पे where I am, everybody is kind of sick. अभी now it's getting over, but, but they were like infections and stuff. और मेरा अपना ही कुछ physical issue चल रहा था. So when I felt the tap, 4-5 times I felt the tap of what is coming, and I was like, अभी तो मैं कुछ नहीं ले सकती हूँ. मतलब, the I like the conviction and the strength with which I rejected, because lot of time for rejection भी मुझे realize हुआ इतनी strong नहीं होती. Because you हाँ, have those नहीं things होती, कि हाँ, चलो, आराम कर लेंगे. ये अच्छा होता है, अच्छा मतलब अब हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब you give या in, या like mother says that, right, या it cannot come without you. But इस बार when I saw कि नहीं, मतलब people were saying कि अच्छा ये ले लो वो करो, ऐसा नहीं, मुझे तो हो ही नहीं, that I was listening to myself कि because it can sound like arrogance too, right. हम्म हम्म तो but it was like कि मेरे पास तो bandwidth ही नहीं है, हम्म मतलब ना, हम्म मतलब बात ही मत करो हम्म कान से, हम्म राइट, हम्म. ये मतलब होना ना बहुत जरूरी है, दिस कन्विक्शन हाँ ना. अदरवाइज हाँ रिजेक्शन, मतलब इवन हम्म मदर सेज ना, इवन अ लिटिल हम्म बिट ऑफ वीकनेस एंड आ जा. हाँ हल्का सा भी हाँ डाउट अगर वहां हुआ तो, हम्म या हम्म, मतलब थू थू थू, बट I saw the strength of denial and या I liked it, मतलब या I could be like wow ये भी possible यस, है कि कोई स्कोप ही नहीं है बिल्कुल इसमें. बिल्कुल बिल्कुल. सो मच टू डू, हाँ नो स्कोप, या. आई थिंक ये हाँ मदर वहाँ पे भी शेयर करती है, व्हेन शी टॉक्स अबाउट पीपल वर्किंग इन, फॉर एग्जांपल,
war zones, है ना, treating mm, mm, soldiers who are, mm, 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 she herself worked, with soldiers World War के time पे. So there, I think I read some anecdote. Just in the middle of the war zone, along with all the infections, you have that capacity of not falling ill because you're not ready to fall ill. You know, so that's also a possibility. No matter how contagious the environment may be. and the same thing she speaks about death, है ना? Hmm. There is a moment where it Hmm. says कि ready, Hmm. है ना? मतलब when you can say nope, Yeah. as if like yeah, in the sense वो भी potential है. बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक वही मैं एक इस बात पे यही बात याद आती है मेरे को कि मतलब मेरी ज़िंदगी जब तक बहुत छोटी है ना, बहुत लिमिटेड है अपने छोटे-मोटे काम और ये सब, तो तब फिर आफ्टर सम टाइम में ऐसा लगता है कि हाँ, हो गया, बस हो गया। लगता है पता है ऐसा? हाँ लगता मतलब है व्हाई हाँ वुड आई हाँ लिव टू, हाँ है ना, वांट टू हाँ लिव मोर, अरे कोई ज़्यादा काम ही नहीं है, सब अपना-अपना लगे हुए हैं, हम्म मेरे को कोई काम नहीं है ना, तो क्यों जीऊँ? तो वही ये है तो कि विधि का विधान है हाँ, मतलब हाँ, हाँ या कि सबने जाना ही तो है, अब मेरा भी टाइम हो हाँ गया। हाँ हाँ मतलब एंड वी डोंट रियलाइज दैट इफ वी एक्चुअली लिव फॉर समथिंग मोर देन हम्म अस, हम्म देन वी वुड हम्म नॉट वांट टू लीव अर्ली। क्यों जाना है इतना बढ़िया, तो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, सो मच ऑफ वर्क इज टू बी डन। हम्म, अब जैसे महाअवतार बाबा जी का बताते हैं, ही इज हाँ हाँ स्टिल इमॉर्टल, he has a higher purpose, he has a higher work to do. Why would he want, let me go away? हाँ He is there protecting us, हाँ listening to the calls of whoever wants his attention. तो जब काम है तो फिर मन भी करता है ना रहने का, फिर हाँ हाँ यू आर एबल टू हाँ रिजेक्ट दैट विद कन्विक्शन. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार आता है which I just offer, then there were so many others too, right? Like, like say, why did a Kabir need to go? Why did a Vivekananda had to go? Because if they were say today here, say Nanak was here, it feels that it would be different, and yet एक अपनी limited सोच दिखती है कि क्या वो है नहीं, है नहीं, हाँ, है ना, हाँ, है ही, है ही, या इतने लोगों को है ना, लोग चैनल करते हैं, ये करते हैं, या एंड ये एक दिखता है कि अगर और भी फिजिकली प्रेजेंट होते, है ना, हाँ, बिकॉज एक फिजिकल फिजिकल वाली जो बात हो रही है, हाँ, जो हाँ, एक कंसेप्शन की लिमिटनेस हाँ, है। अब जैसे अब महाअवतार बाबा जी भी दे से कि अच्छा छोड़ भी देते तो होते, है ना, हाँ, तो उनको क्या जरूरत थी? हाँ, बट आई डोंट नो हाउ इट्स वर्किंग, आई मीन ही फेल्ट द नीड टू बी हियर, ही वाज हियर। और एक एनेक्डोट भी मैंने पढ़ा था कि आई डोंट नो, देयर वाज अ मीटिंग एंड Mahavtar Babaji was like, I think I'm ready now, है ना, मतलब kinds to drop the body and stuff. So there was this, I don't know, lady, मुझे उनका नाम नहीं याद, and she was like कि but क्यों करना है, मतलब why do you want to? He said I just feel कि हो गया, मतलब कि body does not limit me or the body is not giving me anything, तो उसके बिना उसके साथ में क्या फर्क पड़ता है, kind ना. So then he was like then never think, I mean drop it then, अगर आपको कोई फर्क नहीं ओ, पड़ता, be, she spend it in the other way, हम्म, you never think about it हम्म, then. हम्म, मतलब but obviously it's not consistent, but कई बार ये thought आता है कि then why did हम्म, more did not choose to stay, नहीं and वो तो yet हमें नहीं पता ना, मतलब हमें नहीं पता हमें नहीं क्या पता, क्या है हाँ और क्या नहीं हाँ है, हमें नहीं पता. exactly, मतलब महाअवतार बाबा जी के साथ तो ये है कि मैनी पीपल हैव मेट हिम एंड वी हैव हाँ रेड स्टोरीज हाँ ऑन द इंटरनेट, सो हाँ इंटरनेट इज अवर हाँ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना. अब या बाकी चीजें हो रही हैं, हमें उनका इंटरनेट पे पता नहीं है, है, हाँ, पता ही नहीं. हाँ अब जैसे श्री अरबिंदो बताते हैं इन द, आई थिंक इन अलीपुर जेल और वेर एवर, स्वामी विवेकानंद वॉज द वन हु विजिटेड हिम एंड टोल्ड हिम, है हाँ ना. तो हाँ या इसका मतलब है जब हाँ हाँ विजिटेड हिम. या और ऐसे काउंटलेस, हम्म, काउंटलेस नहीं, मतलब इंटरनेट पे तो काउंटेड ही हैं कि ऐसे हैं कि ही केम टू मी एंड एंड वही है शेयर, ना कि थिंग्स डोंट कम इनटू लाइमलाइट एंड हेंस वी हाँ से दैट दे हाँ डोंट एग्जिस्ट, तो वो हाँ 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 कोई प्रूफ नहीं है ना उसका. या जैसे विश्वथामा, lot of people have met him in Badrinath, people ओ talk रियली, about अच्छा. him. हाँ विश्वथामा ही थे ना वो, मनी जिनकी निकाली थी हाँ, जो, आई थिंक, या, हाँ, हाँ, हाँ नाम तो वही लग रहा या है. हाँ हाँ तो मतलब इंटरेस्टिंग. या या और आई थिंक वो भी फेथ, मुझे लगता है कि हाँ हाँ अगेन हाँ डिपेंडेंट हाँ ऑन या फेथ, है ना. या या या
So my bua, my like Behenji had shared this story. I don't know if I didn't share with you. उस टाइम पे बद्रीनाथ वगैरह सारा वॉकिंग था, लाइक लोग महीने महीने की पूरी सप्लाईज लेके वो होते थे तीर्थ स्थान। Hmm. तो उन्होंने सुना था कि विश्वधामा बद्रीनाथ के एरिया में मिलते हैं, एंड लॉट ऑफ टाइम्स ही आस दी यात्रीज वहां पे कि अगर ऑयल है, बिकॉज उनको उस पे ऑयल लगाना होता है, तो दे कैरिड दोज ऑयल बॉटल्स विद देम सो दैट दे कुड ऑफर इट टू देम। इमेजिन कि महीना उठा रहे हैं, इसलिए Really? जब वो मिलेंगे कि उस सर्टिट्यूड से गए कि मिलना तो है ही, Wow. ऐसे करके। एंड देन शी हैड हर ओन स्टोरी कि व्हाट हैपेंड एंड स्टफ, बट प्रीटी अमेजिंग। तो a recording, I think then we can, yeah.